मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। मुझे कॉलेज जाना है। सो अभी मैं नहाऊंगी एंड अपने कपड़े पहनूंगी एंड आई विल बी राइट बैक। सो मैंने नहा लिया। मैं नेल पेंट लगाया था बट वो थोड़ा सा बिगड़ गया है। सो डिओड्रेंट लगा लेते हैं एंड आई विल बी यूजिंग अ टोनर बायोटिक का। मैं इतना कुछ करती नहीं हूँ बट आज कर रही हूँ बिकॉज टुडे आई एम व्लॉगिंग। तो मॉइस्चराइज़र लगाया है और बायोटिक का फेस वॉश जो मैं यूज़ करती हूँ मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया। और सबके मैं नेम्स डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे मैं लिप बाम लगाऊंगी एंड डोंट फॉरगेट योर सनस्क्रीन गाइस, इवन इन विंटर्स जस्ट डोंट। एंड मैं थोड़ा बहुत सा कंसीलर लगा रही हूँ। आई डोंट यूजुअली डू ऑल दिस। मैं बस मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, लिप बाम लगाती हूँ एंड लिटिल बिट ऑफ मस्करा समटाइम्स और मैं कॉलेज चल जाती हूँ। फिर मैं अपने डार्क स्पॉट्स को कंसील कर लूँगी एंड मैं ब्लश लगाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लश लगाना। एंड लिपस्टिक और थोड़ा सा मैंने सेट किया है पाउडर के साथ। और यहाँ मस्करा मैंने थोड़ा सा लगा लिया एंड थोड़े से अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी एंड दिस विल बी माई लुक देन। आईब्रोज रेडी हैं एंड अपने थोड़े बाल बना लूँगी। आई नो आई डोंट लुक द बेस्ट इन दिस व्लॉग, पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लगता है, बट लेट्स गो टू कॉलेज। हाय गाइस, आई एम फाइनली होम एंड अभी
अभी 4:30 हो गए हैं एंड मैं गई थी कॉलेज, 10 बज रहे थे. इट्स बिन अ वेरी वेरी लॉन्ग डे एंड आई एम वेरी टायर्ड एंड मेरे फेस पे मुझे बहुत ज़्यादा डस्ट फील हो रहा है बिकॉज जहाँ मैं बैठी थी वहाँ पे ग्रूमिंग कर रहे थे, तो आई फील लाइक मेरा फेस बहुत गंदा सा हो रहा है. इवन दो इट्स नॉट दैट बैड, आई ऑलवेज वॉश माई फेस जब मैं बाहर से आती हूँ तो. सो अभी आई एम गोना वॉश माई फेस एंड सिंस इट्स ऑलमोस्ट 4:30 मुझे बहुत नींद आ रही है बट आई डोंट थिंक आई विल बी स्लीपिंग. ऑल्सो मेरी फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड होने वाली है and I have to record some more videos till the end of the day, so I will probably just charge my phone for now and just get back to you after I wash my face. So face को wash कर लिया मैंने and I am back in my comfy clothes. Now I'm gonna just put some moisturizer on. So I'm just going to tell you a product which I have been using from last year, and I bought a tub of this last year also and it worked amazing for me. It is actually a spot correcting cream which will help you to reduce your dark spots like I have here and around my cheekbones also. So last year I got so many tiny bumps on my forehead which left really dark spots. So I used this cream which is a Biotic Bio Winter Green Spot Correcting Cream, and it is really really good. Like you will get a tingling sensation as soon as you apply it, and it comes in a really small tub. बहुत छोटा सा टब है and you get I think 10 gram, I'm not sure, 15 gram. So you get 15 gram and when you apply it now you'll get a tingling sensation. And so I usually do this at night, but I think I'm too tired to do this at night, and so I usually apply this at night, but since I don't have anything to do right now and also I don't want to do anything because I'm so damn tired, so I think I'm just gonna put this right now and maybe I'll just wash my face at night and apply some moisturizer and just go to sleep. So let's just apply it. You have to apply only in the areas where you have dark spots, so I will apply. This is done. Now I will apply a lip balm. And guys, it's not the lip balm, it's the residue of the lipstick which is still on my lips, so it's making them look a lot more pink than they actually are. So everything is done and अभी मैं I think Netflix देखूंगी and I will try my best not to sleep because I am really tired and I don't want to sleep now. Usually मैं क्या करती हूँ जब मैं कॉलेज से आती हूँ तो it is not this late today, it was really late because हमारे बहुत सारे practicals थे, so मैं 2 बजे तक घर आ जाती हूँ and घर आने के बाद I usually have my lunch और फिर मैं सो जाती हूँ, I take a really good nap and then I used to study late night, but since today it's not possible, I don't want to sleep now because मैं अभी सो जाऊँगी तो I don't think I'll be able to wake before 7 and I don't want to do that. So hopefully I'll study today जल्दी सब कुछ करके I'll sleep today टाइम से. आज मैं टाइम से सो जाऊँगी. I will not be studying late night. So yeah. So I will get back to you जब मैं कुछ करूँगी तब and अपने फ़ोन को थोड़ा सा चार्ज पे लगा के because it's just like 2-3% बचे हैं because I've been making videos all day and सुबह मैंने सारा चार्ज नहीं किया था and I just got a notification that I should charge my phone. So I will see you soon guys. चलो bye. सो अभी शाम के 6 बजे मैं पास्ता बना रही हूँ. यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स चॉप किए हुए हैं, अनियन, कैप्सिकम, थोड़े से बीन्स, ग्रीन चिलीज और मैं मेयोनीज़ और शेजवान सॉस डाल के एक मस्त वाला पास्ता बनाऊँगी. ऑयल में बटर डाल के आप सबको अच्छे से फ्राई कर लो, स्टर फ्राई कर लो एंड थोड़ा सा जिंजर एंड गार्लिक भी यूज़ किया है मैंने एंड फिर चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो डाल के थोड़ा सा इसे हम और थोड़ी देर के लिए स्टर फ्राई कर लेंगे एंड इसमें फिर थोड़ी देर रोस्ट करने के बाद इसमें 1 चम्मच हम मैदा डालेंगे. मैदे को डालने के बाद उसको भी 2 से 3 मिनट के लिए वी विल कुक एंड देन वी विल ऐड मिल्क. तो मिल्क डालने से पहले यहाँ मैंने शेजवान सॉस डाला है एंड ये ½ टीस्पून था एंड मिल्क जितना सॉस बनाना है ना वाइट सॉस उस हिसाब से डालेंगे एंड दिस विल नॉट बी लाइक नॉर्मल वाइट सॉस पास्ता, इट विल बी रियली टैंगी एंड चटपटा सा, यू विल जस्ट लव इट.
तो यहाँ पे थोड़ा सा और मिल्क मैंने यूज़ किया है टू मेक द सॉस अ लिटिल थिन। एंड मैंने पास्ता डाला है विथ अलॉन्ग विथ सम पास्ता वाटर, और इसको कुक करेंगे 3 मिनट के लिए। एंड देन लास्ट में मेयोनीज़ डाल के वी विल कुक अगेन फॉर 2 to 3 मिनट्स। एंड लास्ट में ब्लैक पेपर डालना है, एंड दिस जस्ट इन्हांसेस द टेस्ट टू अ नेक्स्ट लेवल। एंड दैट्स इट, pasta is ready. Now I will eat it and I'll see you soon, guys. Don't forget to like this video and subscribe my channel. Do share it with your family and friends. Till then, I will see you soon in my next video. Bye bye.